Hello everyone, welcome to the success stories session on EduTap, and today I feel immense pleasure to announce that today I am having with me Miss Samridhi Singh, who has been recently selected as a RBI Grade B officer. So ma'am, first of all, heartiest congratulations to you for being selected as an RBI Grade B officer from the whole behalf of the team EduTap as well as the student fraternity. And please tell us and our aspirant that how are you feeling right now after being selected as RBI Grade B officer? It has been great, a great feeling, obviously, because finally, after a lot of hard work and years of toil, I've been successful in cracking this exam. So definitely, it's a great feeling. So, ma'am, before beginning to the strategy part, can you please tell our aspirants about your background, your education, if and also professional, if you were an working aspirant? Actually, I did my BTech in civil engineering from Kalinga University. After that, I did my MA, Masters in Public Administration from IGNU. Actually, I've been an UPSC aspirant, but I've also given other government examinations like SSC. I've given then the other regulatory body exams, some of the bank exams. Currently, I've been like while I was preparing for RBI, I was working at that time also, and currently I'm in the Ministry of Home Affairs. So it has been a long, long journey for me. Okay, that's really good as it was a very long journey. So as you have already mentioned that you have already given some regulatory bodies exams. So this was your first attempt for RBI, or you have also appeared for the same in the past as well? This was my second attempt. My first attempt was in 2021, but I was not able to crack the prelims at that time. I had 1.25 marks less than the required cutoff, so it was a little disheartening for me. But at the same time, I got my learnings that what shortcomings were there in my preparation, and in this my second attempt, I made sure that I fulfill those shortcomings, and thankfully, I've been successful in the second attempt. Definitely, working on your weaknesses are the very, very important part that one must learn with the experience. So, ma'am, as you have already mentioned that after a long time, it was a long journey as you being selected as an RBI Grade B officer. So, you must have basically काफी हार्डशिप्स रही होंगी आपके इस जर्नी के अंदर. तो किस तरीके से आपने उन टफ टाइम्स के दौरान खुद को बेसिकली मेंटेन किया और फोकस रहे प्रिपरेशन में? प्लीज टेल आवर एस्पिरेंट्स अबाउट दिस. डेफिनेटली एक्चुअली क्योंकि मैंने बताया कि मेरा फर्स्ट जो प्रेफरेंस था वो यूपीएससी था. सो आफ्टर आई डिड माय बीटेक, उसके बाद से ही मैंने आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, और उसके लिए ही जो है मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स किया था. बट यूपीएससी नहीं हो रहा था क्लियर. सो तब फिर रियलाइज हुआ, प्लस एज क्योंकि बढ़ती है, प्लस फिर लोग आपको क्वेश्चन करने लगते हैं कि आप जो है ये एग्जाम भी नहीं निकाल पा रहे, आप किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो. सो उस टाइम पे काफी डिमोटिवेटेड फील होता था, बट माय पेरेंट्स हैड फुल फेथ इन मी. I knew that yes, since I'm 100% honest to my preparation, तो कभी ना कभी उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा. कुछ फ्रेंड्स भी सपोर्ट करते थे कि नहीं आप कर लोगे. तो डेफिनेटली बहुत लोगों का सपोर्ट था, पेरेंट्स का सबसे ज्यादा सपोर्ट था. उन्होंने हमेशा कहा कि आप पढ़ाई करो, आप चिंता मत करो कि किस तरीके से लोग क्या कह रहे हैं, डू नॉट लिसन टू देम. तो फिर मैंने बाकी एग्जाम्स भी देने शुरू किए, एंड बहुत सारे फेलियर्स भी मिले उन एग्जाम्स में. कुछ मार्क एग्जाम्स में 1 मार्क से रह जाती थी, कहीं पे 2 मार्क से रह जाती थी. तो तब लगता था कि शायद पता नहीं मेरी किस्मत खराब है समथिंग. बट फिर जब वही है कि आपका जब रेगुलर कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एग्जाम के लिए. तो तब फिर मैंने रियलाइज किया कि नहीं, मुझे आरबीआई जैसे एग्जाम्स पे फोकस करना चाहिए. मेरे कुछ फ्रेंड्स ने भी मुझे बोला, एंड मेरे रिलेटिव हैं, एक ताऊ जी हैं, उन्होंने भी मुझे बोला कि नहीं आप आरबीआई के लिए करिए प्रिपरेशन, आपका डेफिनेटली होगा, उसमें आप अच्छे से पढ़ाई करते हो तो आपका ऐसा नहीं है कि कब तक कहते हैं ना कि किस्मत कब तक आपका साथ नहीं देगी. तब फिर जो है मैं आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग. फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे उतना ज्यादा सिलेबस का आइडिया भी नहीं था, बट स्टिल मैंने दिया, एंड मेरे अच्छे मार्क्स आए थे प्रीलिम्स में. बट वही है कि 1.25 मार्क्स से मेरा प्रीलिम्स रह गया था. देन फिर इन माय सेकंड अटेम्प्ट आई वाज वर्किंग, बट उस टाइम पे भी सिंस आई वाज वर्किंग एज एन असिस्टेंट, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे और बेटर करना है, एक ऑफिसर बनना है.
तो तब जो है मैंने आरबीआई के लिए प्रिपेयर किया। डिफिकल्ट था डेफिनेटली, क्योंकि जॉब के साथ काफी मुश्किल हो जाता है। आप घर आते हो 6:30 7 o'clock, फिर उसके बाद आपको पढ़ाई भी करनी है एंड एवरीथिंग। तो उस टाइम पे फिर मोटिवेशन था कि नहीं, लाइफ में कुछ अच्छा करना है एंड इतनी पढ़ाई की है तो आगे भी अच्छे से करेंगे। तो That फिर was my second question to you, that how did you maintain your motivation levels during that time? Kyunki when you are basically facing such kind of failures, always, as you already mentioned, that consistency is the key. But how did you maintain your motivation levels during those tough times? देखिए, दोनों दो तरीके के मोटिवेशन होते हैं। वन इज योर इंटरनल मोटिवेशन, सेकंड इज योर एक्सटर्नल मोटिवेशन। सो एक्सटर्नल मोटिवेशन डेफिनेटली था कि आई वाज नॉट वेरी हैप्पी विद माय जॉब, बिकॉज आई ऑलवेज फेल्ट कि आई एम मेंट फॉर समथिंग बेटर। एंड इंटरनल मोटिवेशन था दैट फ्रॉम सिंस चाइल्डहुड मुझे था कि नहीं, आई हैव टू डू अपने अपने पोटेंशियल के हिसाब से बेस्ट करना है। सो अंदर से वो जो कहते हैं ना कि मजा नहीं आ रही थी अपने जॉब में, और लग रहा था समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज मिसिंग। इनिशियली जैसे राइट आफ्टर माय बीटेक मैंने जो है प्राइवेट जॉब भी की एंड इट वाज पेइंग मी वेल। बट वहां पे भी ये लग रहा था कि एक तो सर्विस टू द नेशन का हमेशा से दिमाग में था, Hmm. दैट आई हैव टू डू समथिंग फॉर द सर्विस ऑफ द नेशन। दैट इज व्हेन आई रियलाइज कि नहीं, आई हैव टू गो इन अ गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि वो ओवरऑल फुलफिलमेंट फील नहीं हो रहा था, देयर वाज समथिंग लैकिंग। तो जब एंड मोटिवेशन तो तब आ जाएगी ना जब आपको मन कर रहा है कोई चीज करने का, यू आर फीलिंग हैप्पी अबाउट इट, दैट यू नो कि हाँ मैं ये काम कर रही हूँ क्योंकि मुझे इससे मेरा बेनिफिट होगा, मुझे खुशी मिल रही है इसमें। तो वो हैप्पीनेस मिलती थी जब भी मैं पढ़ती थी, और लगता था कि हाँ डेफिनेटली होगा। बाकी पेरेंट्स तो थे ही सपोर्ट करने के लिए। तो ऐसी मोटिवेशन आता रहता था, करते रहते थे। ऐसा नहीं है कि मैं कभी डाउन फील नहीं करती थी, Hmm. रोती नहीं थी। बट हाँ, जब भी ऐसा फील होता था, डाउन फील होता था, तब आई ऑलवेज यूज टू रिमाइंड माई सेल्फ दैट वेयर आई वॉन्ट टू बी, उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। So, do you want to give any stress buster to our aspirants that they can use during such kind of times when they are facing such kind of situations? Yeah, basically, I'm a singer myself, and I love listening to songs. So whenever I felt low, or I felt not very happy about what I'm doing, so I used to listen to music. So आपको जो भी अच्छा लगता है आप उस टाइम जरूर करिए। थोड़ा टाइम, take out some time for yourself whenever you feel stressed. Write a poem, listen to some songs, talk to some of the friends who can motivate you. These are the things that you should do regularly. Very good, ma'am. So, as you have mentioned that you were a working aspirant basically. So, how did you manage your time? Because as a working aspirant, always you lack some time to prepare in a right phase, in a right direction, and you always lack time. So, how did you manage your time during that part? See, I had allotted time for different subjects. For example, I knew कि हाँ the notification कब आएगा, तो उस हिसाब से I made sure कि notification आने से पहले at least I had given one reading for the mains, जो भी subject है mains के, ESI, FM, English। तो उन तीनों का मेरा था कि अगर पूरा नहीं भी हो पाता तो एटलीस्ट 60 to 70% सिलेबस इज कंप्लीटेड बिफोर द नोटिफिकेशन। सो उस टाइम से लाइक नाइट टाइम में, क्योंकि मुझे क्वांट्स मैं मॉक भी लगाती थी कुछ कुछ प्री के लिए। सो मैंने डिवाइड कर रखा था कि मंडे टू फ्राइडे मुझे मेंस का पूरा पढ़ना है, एंड सैटरडे संडे आई विल गिव फ्यू मॉक्स, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट फिर मैं नेक्स्ट वीक का प्लान करती थी। तो सैटरडे संडे में जैसे मैंने प्रीलिम्स का मॉक लगाया, तो 2-3 मॉक्स में ही आई रियलाइज कि मेरा कौन सा रीजनिंग में आई हैड सम इश्यूज, उतना अच्छे मेरे मार्क्स नहीं आ रहे थे। तो उस टाइम पे फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं रात के टाइम में 7 बजे से लेके 10 बजे तक मैं कुछ यूट्यूब वीडियोस देख लेती थी कौन सा रीजनिंग के लिए, या फिर मॉक्स के सोल्यूशन जो है किस तरीके से बेस्ट कम टाइम में किए जा सकते हैं, तो वो करती थी। एंड मॉर्निंग टाइम में जो है आई यूज टू गेट अप एट अराउंड 5 और समथिंग, 5:36। एंड उसके बाद जब तक ऑफिस नहीं जाती थी तब तक मैं पढ़ती रहती थी, और जितना भी हो पाता था उतना पढ़ती थी। So, very important thing. Basically, planning is also a यस। very important part that plays its very important role.
And very good, ma'am. So always for the aspirants, as you are also a BTech and you are not from the finance background, so most of the people have basically a myth in their mind कि यार मैं तो finance background से नहीं हूँ. Is it possible for me to prepare for the exam? तो ऐसे aspirants के लिए क्या आंसर देना चाहेंगे आप? डेफिनेटली देखिए, आरबीआई की बेस्ट चीज ये है दैट दे हैव अ वेरी गुड सेग्रीगेटेड सिलेबस, एंड उनकी नोटिफिकेशन में दे हैव गिवन द सिलेबस, एंड आप सिलेबस अच्छे से पढ़िए, आप पास प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिए, एंड आप जो भी टॉपिक्स दिए हुए हैं उनको अच्छे से माइंड में एक बार आप देखिए, उनको कई बार रीड करिए, उसको पूरा डिसाइड करिए कि व्हाट इज द सिलेबस, अंडरस्टैंड द सिलेबस वेरी वेल, एंड आप एक एक टॉपिक्स उठाते जाइए, एंड आपको कोई भी इश्यूज आते हैं तो डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ कोचिंग्स जिनका आप हेल्प ले सकते हो, देयर आर क्रैश कोर्सेज, तो उनका भी आप हेल्प ले सकते हैं। वरना आई थिंक कि आप जो है सिलेबस को दिमाग में रख के अगर आप करोगे तो डेफिनेटली नो मैटर आप फाइनेंस बैकग्राउंड से हो कि नहीं हो, आपका हो जाएगा। वेरी गुड. सो आई रियली बिलीव कि उन सभी एस्पिरेंट्स को उनका आंसर मिल गया होगा दैट बेसिकली दे वर सीकिंग. Now let's move on to the phase one preparation. So how did you prepare for the phase one, basically for the quant, reasoning, and English? And after that, we will be moving towards the general awareness part. Yeah. So as I mentioned that I used to solve at least 2 mocks every week. And I used to keep a timer, मतलब टाइम में फेज में ही करती थी, ऑनलाइन ही करती थी मैं. सो उससे क्या होता है कि आपको एक आइडिया लग जाता है कि इन विच फील्ड्स आर यू लैकिंग. तो जैसे मैंने बताया कि मेरा कौन सा रीजनिंग में आई हैड सम इश्यूज. सो कौन सा रीजनिंग के लिए वही है कि देयर आर सम यूट्यूब वीडियोस, एड्यूटैप के भी बहुत सारे वीडियोस हैं, तो उसमें भी आपका जो एक बार ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कम टाइम लगेगा, बिकॉज अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो तो यू डू नॉट नो द शॉर्ट ट्रिक्स और जो कम टाइम में सॉल्व करने के लिए होते हैं. तो इस केस में आपको यूट्यूब के कोई वीडियोस आप ले लीजिए, एड्यूटैप के भी बहुत अच्छे वीडियोस हैं, तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी कि हाँ आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका एक बारी. So as I mentioned, so how did EduTap's videos helped you in clearing those concepts and helping you in clearing that particular section? ये डेफिनेटली सिंस क्वांट्स और रीजनिंग के लिए काफी अच्छे वीडियोस हैं यूट्यूब पे. सो जिस भी टॉपिक में मुझे प्रॉब्लम होती थी, फॉर एग्जांपल सिलॉजिज्म में आई हैव सम इश्यूज, सो आई जस्ट यूज्ड टू सर्च यूट्यूब पे एड्यूटैप सिलॉजिज्म, एंड एक बारी देख के फिर जो भी उन्होंने कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, शॉर्ट ट्रिक्स बताए हैं, फिर वो उसको यूज करके जब मैं अपने मॉक्स देती थी तो डेफिनेटली मुझे उन क्वेश्चंस में फिर इश्यूज नहीं आते थे. तो धीरे धीरे करते करते सिंस एक लॉन्ग पीरियड के लिए वही है कि छोटे छोटे टॉपिक्स लेके आप करोगे तो आपको टाइम भी ज्यादा नहीं लगेगा, एंड फिर द कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होते चले जाएंगे. और जहां तक की बात रही इंग्लिश की, सो इंग्लिश में मैंने कोई ऐसे सोर्स अलग से नहीं लिया, मैंने बस मॉक्स सॉल्व किए थे इंग्लिश के लिए. और करंट अफेयर्स डेफिनेटली क्योंकि इतना ज्यादा वास्ट हो गया है, एंड आरबीआई इज आस्किंग काफी वास्ट टॉपिक्स पे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, और आपके फेज वन में ही जो है वो आपके फाइनेंस और ईएसआई से रिलेटेड भी काफी सारे टॉपिक्स पूछ लेते हैं. तो उस टाइम पे जो है जैसे एड्यूटैप की मैगजीन आती है आपकी, तो उसमें अलग अलग सेक्शंस दिए रहते हैं, तो उसमें आई वुड से कि जो भी एस्पिरेंट्स है वो एएसआई और फाइनेंस पे जरूर फोकस करें. ये ना सोचें कि ये तो मेंस में आता है तो अभी से पढ़ के क्या करें. मेक श्योर दैट यू रीड इट बिफोर हैंड, अपने फ्री के लिए भी आपको वो फायदा देगा. तो उसके अलावा मैं तो मॉक्स के भी काफी मतलब क्वेश्चंस जो भी करंट अफेयर्स में होते थे उनको भी पढ़ती थी. देन अफेयर्स क्लाउड की मैगजीन पढ़ती थी. तो 2-3 सोर्सेस आप लेके चलिए तो हो जाएगा आपका करंट अफेयर्स. Good to hear that. So in a nutshell, basically you prepared from the mocks, and along with जो topics आपके थोड़े weak थे, you just searched out the videos for them and you Yes. covered the concepts, and then you just made sure कि yes, now this topic is not my weakness anymore. Yes, So correct. doing this is a very, very important thing, that working on your weaknesses is a very important part whenever you are covering for such kind of competitive exams. Very good to Definitely. hear that. So ma'am, when I talk about the current affairs, as you mentioned about the EduTap magazine, so how you found it helpful for the RBI Grade B exam? कि कितनी वो helpful थी? क्या वो requirement को पूरा करती है for the RBI Grade B exam or not? Definitely, it is catered to the RBI aspirants itself. So काफी मुझे हेल्प मिली थी उससे, एंड मैं मंथली जो है एड्यूटैप की मैगजीन पढ़ लेती थी.
तो वही मैंने कहा कि आप 2 बार रिवाइज कर लेती थी मैं उसको, एक बार फर्स्ट टाइम मैं रीड कर लेती थी, फिर मैं दूसरे सोर्स जो भी थे उनसे रीड करती थी, क्वेश्चंस लगा के देखती थी वेदर आई एम एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस और नॉट इन द मॉक्स रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। इफ आई वाज एबल टू सॉल्व अ पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ दैट टॉपिक देन आई बस उसको रीड कर लिया, टिक कर लिया, नहीं तो फिर आई यूज टू अगेन गो टू द मैगजीन एंड रीड इट अगेन। एंड डेफिनेटली फोकस, क्योंकि आपका सेग्रीगेशन काफी अच्छा है, इकोनॉमिक्स का अलग से दे रखा है, फाइनेंस का अलग से दे रखा है, तो आपका जो आप मतलब पढ़ते हो स्टैटिक अपने फेज 2 के लिए, सो उसका भी आपका उसी टाइम पे बेस बनता जाता है करंट अफेयर्स के लिए भी, सो दैट फेज 2 में यू डू नॉट फील कि अचानक से ये क्या आ गया, मैं तो न्यूज मतलब ये तो मुझे पता ही नहीं था न्यूज में क्या चल रहा है। एंड डेफिनेटली न्यूज़पेपर्स भी, अगर आप कोशिश करिए कि कोई एक ना एक न्यूज़पेपर आप रेगुलर पढ़िए, सो दैट यू आर इन ट्यून विद व्हाट इज हैपनिंग इन डेली, क्योंकि हम जो मैगजीन्स होते हैं वो जनरली मंथली पढ़ते हैं, तो न्यूज़पेपर अगर आप डेली पढ़ोगे तो आपको ये होगा कि हाँ मैं डेली भी न्यूज में आई एम इन टच विद द न्यूज, फिर मंथ एंड में आप मैगजीन के साथ उसको आपको वो थर्ड रिवीजन हो जाएगा। So which newspaper basically you used to follow during those times? मैंने हमेशा से आई हैव यूज्ड इंडियन एक्सप्रेस। Indian Express. यस। So, as you have mentioned about reading the magazine, then solving the MCQs, can you tell our aspirants about the importance of solving current affair MCQs, basically? Yeah, definitely. A lot of people think कि we will only solve quants and reasoning mocks, and they do not focus on solving current affair mock. The issue with that, especially in my case, was that if you keep on reading a particular topic, you are not able to gauge what is more important and what should be the what should be retained और क्या उतना important नहीं है. But when you keep on solving mocks in current affairs, तो आपको वो grasp करना आ जाता है कि हाँ मेरे को मैगजीन में क्या टॉपिक ग्रास्प करना है, किस तरीके से पढ़ना है। फॉर एग्जांपल जैसे आरबीआई का हमेशा से करंट अफेयर्स है, डेटा पे ज्यादा फोकस रहा है। सो बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट वी टेंड टू फोकस मोर ऑन कॉन्सेप्ट्स, बट वही है कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स यूपीएससी में और आरबीआई में या फिर अदर किसी भी एग्जाम का आपको पैटर्न तभी पता चलेगा जब आप उसके मॉक सॉल्व करोगे। तो फिर जब आप उसके मॉक सॉल्व करते हो तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है दैट यस आई हैव टू रीड इट इन दिस वे, तो आपका उससे टाइम भी सेव होता है, डेफिनेटली प्रैक्टिस भी हो जाती है और एक तरीके का वो रिवीजन भी हो जाता है आपका। And you also got the idea that on what dimensions the questions are going to be यस। asked in the exam. तो किस करेक्ट। dimension पे आएगा, तो basically क्या क्या वो areas हैं that you have to pick from any particular current affair. करेक्ट। So it gives you the idea about that, and that's how it going to help you in the exam as well. Very good, ma'am. So when I talk about the current affairs part, so that was the thing, and I really believe कि जो हमारी team है that will be really very happy to hear from your end कि current affairs magazine was really useful, and the segregation that you like, the segregation between the GA, the ESI section and the finance section. So definitely we will basically continuing our effort in making it more helpful for the future aspirants as well. So now, ma'am, moving towards the phase 2 preparation here. So first of all, very important thing, as we all know that the pattern has been changed now and the rules of the game has been changed. Now we have descriptive as well. So what do you think that what are the how to prepare for the descriptive answer, descriptive writing, and what exactly are the good elements of a descriptive answer? See, there are two elements of the descriptive answer writing. First of all is concept building, and second is practice. If you are lacking in any one of these dimensions, then there will be an issue. So obviously आपका concept भी आप build करते रहिए, साथ साथ में make sure that you keep on practicing, because since it's in typing formats, a lot of people have issue कि हम time पे कैसे complete करें अपना paper, because लोग read तो करते हैं but एक तो mocks नहीं देते हैं, और दूसरी चीज हो गई मॉक्स देते भी हैं तो टाइम फ्रेम में नहीं देते हैं, लिख के दे देते हैं, उसको टाइप नहीं करते हैं। सो एक तो जो है कि आप पूरा, मैंने क्या किया था कि सिलेबस अपना, वही मैंने कहा कि आरबीआई की नोटिफिकेशन से सिलेबस उठाया था मैंने, एंड टॉपिक्स वाइज जो है अपने नोट्स बनाए थे, कुछ अदर सोर्सेज की भी हेल्प ली थी मैंने, और इनफैक्ट जैसे ईएसआई हो गया, एफएम हो गया, तो उसमें जो भी टॉपिक्स मुझे लगता था कि हाँ ये मुझसे हो जाएंगे, तो उनके मैं अपने खुद से नोट्स बना लेती थी, और जिनका मुझे लगता था कि नहीं मुझे कहीं हेल्प की जरूरत होगी तो मैं अलग अलग सोर्सेस को यूज कर लेती थी।
और अब जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज आती है वो है आपकी प्रैक्टिस। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप मॉक्स दो टाइम टू टाइम, और उन मॉक्स में आप देखो कि आप टाइम से कंप्लीट कर पा रहे हो कि नहीं। एंड आई वुड सजेस्ट कि फेज 2 के लिए यू पीपल शुड बाई अ मॉक सो दैट दे गेट गुड रिव्यूज कि हाँ आप कैसा लिख रहे हो, बिकॉज गेटिंग अ रिव्यू इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू कीप ऑन राइटिंग एंड देयर इज नो वन टू टेल यू कि इफ यू आर नॉट, ठीक है वो मतलब आपकी मर्जी है, आप किसी फ्रेंड से भी रिव्यू ले सकते हो, दैट इज बट योर चॉइस, बट डेफिनेटली आप रिव्यू जरूर लीजिए किसी से, सो दैट आपकी शॉर्टकमिंग्स क्या है कोई आपको बता पाए कि हाँ आप इन डायमेंशंस पे लिख सकते हो। और डेफिनेटली हमेशा आई यूज टू मेक श्योर कि मैं पॉइंट फॉर्मेट्स में लिखूं। मैंने हमेशा पॉइंट फॉर्मेट में लिखने की कोशिश की है, बिकॉज अब वही है कि a lot of aspirants are writing the same answer, but how will you make sure that the examiner likes your answer? So you have to uh, make sure कि आप maximum dimensions cover कर रहे हो अपने आंसर में, और इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन के फॉर्मेट में आप लिख रहे हो, एंड टाइपिंग स्पीड आप हमेशा मेंटेन करिए। So as you mentioned about the typing, so how did you manage the typing part, and did you stick to the word limit which was mentioned in the exam? Yeah, actually, I have been an aspirant of SSC also. So I had I had a decent typing. I bought a typewriter, and right before the examination, जो भी मैं mocks देती थी, although right before the examination बहुत सारे mocks नहीं दिए थे मैंने, मतलब 7-8 mocks दिए होंगे, तो वो सारे मैंने वो टाइपराइटर की हेल्प से ही दिए थे। एंड डेफिनेटली मेरी वर्ड लिमिट क्रॉस हो गई थी एक्चुअली, मैंने ज्यादा लिख दिया था अपने अच्छा। जी। मतलब मॉर्निंग वाले में जो हमारा एफएम था उसमें तो मैं उतना नहीं लिख पाई थी, बट ईएसआई एंड इंग्लिश में मैंने वर्ड लिमिट से भी थोड़ा ज्यादा ही लिख दिया था। तो वही है कि प्रैक्टिस आप करेंगे तो उसमें कोई इशू नहीं है। एंड क्योंकि क्या होता है कि आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने करंट अफेयर्स का बताया था ना, तो अपने सारे आंसर्स में करंट अफेयर का डायमेंशन डालना बहुत जरूरी है। आई थिंक दैट हैज मेड द डिफरेंस इन दैट मेक द डिफरेंस कि कोई सिलेक्ट होगा कि नहीं होगा, कि आप कितने डायमेंशंस पे अपने आंसर लिख पा रहे हो। Okay. And ma'am, apart from that, we all know that the duration of the exam is very long. It's around 5.5 hours. So how can Yes. one get acclimatized to for sitting for those long hours in the exam? See, if one is preparing for RBI, so you have to get acclimatized to the same, because you have to study for long hours first of all, and secondly, whenever you are studying, make sure कि आप एक टाइम लगा के रखो कि नहीं मुझे अभी 2 घंटा सिटिंग करनी ही है। एंड अब वही मैंने कहा कि मैं मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक भी मैंने 2 मॉक्स दिए थे, टू मेक श्योर कि मैं पूरे टाइम को अच्छे से मतलब कॉन्सेंट्रेट करके दे पा रही हूँ कि नहीं दे पा रही हूँ। सो उसको वही है कि सिमुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज के लिए। एंड आप बस ऐसे ही अगर आप सोचोगे कि उस दिन हो जाएगा अचानक से, तो मुझे तो नहीं लगता ऐसा होगा। सो यू हैव टू सिमुलेट द कंडीशंस, और मीन्स तो आई रिमेम्बर, तो एसी वेसी ऑफ करके आप आराम से अपने कंप्यूटर के सामने बैठिए, उसको पूरा कंडीशन सिमुलेट करिए, एंड आप देखिए कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो डेफिनेटली आप 2-3 बार ऐसा करोगे तो यू विल बी एबल टू डू So practicing is basically the key here to get इट। यस। acclimatized and for also the typing part as well. यस। So now moving towards the phase two, that is, let's first of all talk about what was your most favorite section of the phase two. It was finance management, economic social issues, or the descriptive English part. My favorite part was ESI, because I have been a student of economics till class 12th. So it was easy to learn, easy to understand for me also. And definitely I have a lot of interest in understanding about the budget of our country and other related things. So वो मेरा favorite था ESI. So can you tell our experience that what is the low hanging fruit when I talk about the economics and social issue section? See, one of the low-hanging fruits is definitely union budget, because there are a lot of questions that are asked in union budget, not only in the mains but also in prelims. उसके अलावा जो रिपोर्ट्स आते हैं आपके, जो गवर्नमेंट रिपोर्ट्स निकालती है, जो पब्लिश करती है, कुछ इंडेक्सेस आते हैं, वो भी आपके हर साल आते हैं, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देर आर लाइक 4-5 इंडेक्सेस हैं, रिपोर्ट्स हैं जो आपको
अपने दिमाग में रखनी है। इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई थिंक वो हर कोई पढ़ता है एंड दे आर वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो, बिकॉज इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आप स्टैटिक क्वेश्चंस आप उससे कर पाओगे मेंस में या फिर प्री में। even when you know the data, you know what the concepts behind what is going on in our economy, so that will help you in writing good answers in mains also, and also it will reflect in your answers when you give the interview. Okay, ma'am, now please tell our aspirants about the importance of static and the current affairs and the economics and social issues, and what do you think is more important to be covered among the two? See, the nature of the examination is changing, and more emphasis is on current affairs now. But definitely, you will be able to understand the current affairs only when your concepts are clear. So, I what I did was that I used to, as I said, that I used to read the static portion, but also the current affairs also have to go hand in hand. Your newspapers have to be read daily इफ पॉसिबल। जैसे मैंने इकोनॉमिक टाइम्स भी पढ़ना स्टार्ट किया था बाद में, राइट बिफोर माय मेंस प्रीलिम्स के जस्ट बाद, तो इट आल्सो हेल्प मी अ लॉट इन understanding and writing answers. So what are the focus areas of the ESI current affairs? What areas you focus on? Were they schemes, reports, or the ESI and finance current affairs? See, schemes and reports are definitely very important. Although इस साल जैसे prelims में there were not a lot of questions asked on schemes, but if you know the mains में बहुत questions थे ESI में जो scheme से directly आए थे। उसके अलावा जब आपको schemes और reports पता होते हैं ना, मैंने जैसे बोला कि data, you know the data, so वो आपके answers में reflect करेगा। And definitely बाकी जो topics हैं आपके ESI के जितने भी टॉपिक्स हैं आपके, चाहे वो ग्रोथ हो, इन्फ्लेशन हो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, वो सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यू हैव टू मेक अ बैलेंस कि हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक चूज करके उस पर पूरा मास्टरी कर लूं और दूसरे को मैं इग्नोर कर लूं, बिकॉज पेपर एकदम बैलेंस्ड आता है आपका। कोई आप ये नहीं कह सकते कि हाँ मैंने ईएसआई बहुत अच्छे से कर लिया बट एफएम नहीं किया, या ईएसआई में आई हैव डन सम टॉपिक्स वेरी वेल, वो वाले छोड़ दिए, नाउ इट वोंट हेल्प। आपको करना सब पड़ेगा, बट हाँ डेफिनेटली आप जिसमें ज्यादा कंफर्टेबल है, जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, आप उसको ज्यादा अच्छे से करिए। Very good. So apart from that, now let's talk about the finance and management. What do you think that is the low-hanging fruit in the finance and management? See, management mein, it was a new subject for me, but I really enjoyed a lot in reading it, because also public administration में मैंने जब masters किया था, तो there were some topics जो कि करते थे, overlap करते थे। तो management I found it very interesting. Also जो needs, आपकी जो theories है, motivation हो गए, leadership हो गए, ये सब जो topics हैं आपके, वो काफी easy है और उनसे questions भी बहुत आते हैं। सो मेक श्योर कि आप जो थ्योरीज वगैरह हैं कोई भी मैनेजमेंट में, उनको नहीं छोड़ के जाइए, वो आप जरूर करिए। और जहां तक की बात रही फाइनेंस की, तो डेफिनेटली फाइनेंस तो आपका आरबीआई के फंक्शंस हो गए, या जितने भी बाकी इंपॉर्टेंट बैंक्स, डेरिवेटिव्स, ये जितने भी टॉपिक्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनके बेसिक्स एटलीस्ट पता होने चाहिए सबको। और बाकी तो आप क्वेश्चंस जैसे जैसे लगाओगे मॉक्स के थ्रू, या फिर इवन अपने जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के से आइडिया लग जाएगा कि हाँ कौन से टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं, कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उन पे ज्यादा फोकस करिए। Okay. So in the finance, please tell our aspirants about the importance of current affairs and also the importance of RBI notifications when we talk about the finance and management section. See, RBI website in itself is very, very important in the entire RBI recruitment process, because वो website पे आपको एकदम crisp और एकदम correct आपको information मिल जाएगी। We keep on seeking various resources की finance कहाँ से पढ़े हम। एक तो definitely EduTap की magazine में जो मैंने कहा कि अलग से आपका एक section दिया हुआ है, आप उसके थ्रू भी पढ़िए। And उसके अलावा आप RBI की keep on visiting the RBI websites, what circulars are coming, what notifications recent आ रहे हैं आपके, so उससे you will get an idea कि हाँ RBI किस तरीके से functioning करता है। और RBI का जो मतलब मैंने notice किया, जो mains में आपका question
आए थे वो आरबीआई के रिसेंट जो सर्कुलर्स और नोटिफिकेशन इनसे काफी रिलेटेड थे। उसी का थोड़ा एक एक्सटेंशन था जो कि क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, और इंटरव्यू में तो डेफिनेटली इट वाज वेरी मच इंक्लाइन टुवर्ड्स व्हाट आरबीआई वेबसाइट इन इटसेल्फ कंटेन। I believe that the aspirants must have got the answers to their questions. Now let's talk about the descriptive English part. So in the descriptive English, what was the your order of attempt and how did you allocated the time to those three questions which are being asked in the exam? I had prepared a lot of essays beforehand itself, and like EduTap also comes with important topics. YouTube पे video आई थी कि हाँ these are the important topics that are and actually उसमें से काफी मुझे मिले भी हाँ ऐसे में जो topics थे। तो जो भी important topics हैं आपके जो न्यूज में चल रहे हैं इश्यूज, बिफोर हैंड मैंने क्या किया था कि उन एसेस की एक मतलब समरी बना ली थी जिस टाइप का मेरे दिमाग में था कि हाँ हर टॉपिक का जैसे इकोनॉमिक पॉलिटिकल क्या इश्यूज चल रहे हैं आपके, स्पेशली न्यूज में क्या चल रहा है। सो जस्ट मेक सम पॉइंट्स कि हाँ ऐसे के लिए तो आप ऐसे कर सकते हो। उसके अलावा प्रेसी राइटिंग आप आई थिंक मॉक्स के थ्रू 2-4 मॉक्स लगाओगे तो वो सॉल्व हो जाता है। तो मैंने सबसे पहले ऐसे अटेम्प्ट किया था, उसके बाद बाकी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। So how many full-fledged mocks you appeared in for the phase 2 exam? And what is the Uh, importance of that? See, for phase 2, I gave around 7-8 mocks, तीनों sections को मिला के। उसके अलावा individually भी if I felt कि ESI में मेरे उतने अच्छे marks नहीं आ रहे हैं, so सिर्फ ESI के लिए भी मैंने mocks दिए। Mocks are very important. First of all, you will not know where you stand until and unless you test yourself. सो आप पढ़ रहे हैं बट आप उसको यूटिलाइज नहीं, मतलब एनालाइज नहीं कर रहे हैं उस नॉलेज को, तो कोई फायदा नहीं है। दूसरी चीज ये हो गई कि टाइम फ्रेम में आप व्हाट आंसर्स आर यू एबल टू राइट, आर यू एबल टू रिकलेक्ट व्हाट एवर यू हैव read or not, that mock help you in that. थर्ड इज वही मैंने कहा कि टाइपिंग के साथ आप करिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एट इन द फाइनल एग्जामिनेशन you have to write in that time. If you are not able to recollect, if you're not able to write your whatever you have been thinking in that particular time, कोई फायदा नहीं है। So mocks definitely बहुत important है। So once again, practicing, testing, and analyzing your weaknesses are the very important things that you must do as an aspirant when you are Yes, aspiring to become RBI Grade B officer. So definitely. yeah. So ma'am, apart from that, please tell our aspirants about the importance of revision in both the phase 1 and the phase 2 of the preparation of the RBI Grade B exam. See, what a lot of aspirants tend to do, that they keep on thinking first I will complete the syllabus and then I will revise it. So I don't think that thing of syllabus complete हो गया वो वाली feeling कभी नहीं आती है। You keep on studying, आपको लगेगा यार ये वाला portion रह गया है वो वाला। And So what definitely I the current affairs keeps on adding, adding, and adding. yes, and even static में भी you will, आप पढ़ते जाओगे आगे पीछे का थोड़ा भूलते जाओगे, पता नहीं क्या था क्या नहीं था। तो रिवाइज करना, रिविजन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि फॉर द होल वीक आई यूज्ड टू रीड, एंड फिर सैटरडे संडे में मैं जो भी मैंने पढ़ा था थोड़ा सा रिवाइज कर लिया। तो उससे क्या होता है कि एक तो आपको लगता है कि हाँ यू आर गोइंग समवेयर, नहीं तो पता चला आपने उसको नेक्स्ट 15 दिन बाद यू जस्ट ओपन अप द बुक एंड यू नॉट एबल टू रिकलेक्ट एनीथिंग। सो उससे एक तो हमें डीमोरलाइज फील होता है कि whether whatever I'm reading am I able to retain it or also not. दूसरी चीज ये हो गई कि वही मैंने कहा, आप रिवीजन के लिए आप मॉक्स भी सॉल्व करिए, बहुत बेस्ट तरीका है आपका रिवीजन करने के लिए। तो जितना इम्पोर्टेंट आपका नई चीजें रीड करना है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपका रिवाइज करना है। सो रिवीजन इज अ मस्ट, एंड मेक श्योर कि आप या तो एवरी सेकेंड डे कर लो आप रिवाइज, या फिर अगर आप वर्किंग एस्पिरेंट हो तो डेली उतना टाइम नहीं मिल पाता है, तो सैटरडे संडेज जो भी आपको मिल रहा है उसमें आप रिवीजन जरूर करिए। So revision plays a very important part. Now let's move Yes. on to the next important process of the cycle, that is the interview. So how did you prepare for the interview and how was your interview experience for the RBI Grade B exam? Interview was actually a very, very beautiful experience, I must say. My interview was held in New Delhi, and I was mesmerized by the RBI building and the entire structure.
बाकी टॉकिंग अबाउट द प्रिपरेशन, सो प्रिपरेशन राइट आफ्टर मेंस मैंने स्टार्ट कर दी थी. एंड प्रिपरेशन एक्चुअली जो इंटरव्यू के लिए होती है वो आपकी डे वन से ही शुरू हो जाती है, व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई. बिकॉज वो आपसे इंटरव्यू में हर तरीके के क्वेश्चंस पूछेंगे. लाइक दे आस्क्ड मी स्टार्टिंग फ्रॉम आरबीआई बैलेंस शीट टू व्हाई आई वांट टू जॉइन आरबीआई, सब कुछ दे आस्क्ड मी. एंड उस टाइम पे आपके कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर होने ही होने चाहिए. कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर वॉट एवर यू नो कॉन्फिडेंटली. एंड for me, since I was from a non-finance background, so I had this थोड़ा सा था इनहिबिशन की पता नहीं अच्छा होगा कि नहीं होगा, और बहुत ज्यादा फाइनेंस से क्वेश्चंस पूछ लिए तो would I be able to answer or not. But they know your background, the panelists know your background, and they will make you feel comfortable, and वो उस हिसाब से ही क्वेश्चन आपसे पूछेंगे. चेयरपर्सन सर ने भी मुझसे फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछा था, that they know that I'm not from a finance background, so they will, so he would ask me accordingly. So do not think कि नहीं आप नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से हो और आप इंटरव्यू तक पहुंच गए हो तो अब तो 1-to-1 में पता नहीं क्या पूछ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है. What if a question is being asked and you don't know the answer? So is it okay to say no to that particular question? Yeah, definitely. You just say that sorry, I do not I'm not able to recollect the answer correctly, or sorry, I do not have the answer to it, and they will move on to the next question. Just maintain your calm, have faith in yourself that yes, since you have reached up to here, आप में कुछ तो बात होगी. तो definitely आप जो भी आपको आता है आप पूरे confidently बताइए, and definitely वो बहुत support करते हैं. Definitely Interview believe in में. yourself is a very important thing. Yes. So how did you what did you read for the RBI interview, RBI notifications, circulars, the RBI website, and anything else that you have read for? Yeah, actually, there were two important things. First was obviously the RBI website and the reports that RBI comes up with. तो RBI website में जो भी notifications थे, circulars थे, RBI की history हो गई, how does RBI work, what are the departments of RBI, ये आपका clear होना चाहिए. Second thing is mocks बहुत important होते हैं. तो मैंने EduTap के साथ भी mock लिया था, तो उसमें भी एक मुझे जो है मैंने crash course provide किया था free of cost. तो उसमें there were a lot of important जो भी summaries थे reports वगैरह के, उनके summaries दिए हुए थे. तो it helped me in revising at the last moment. So उससे क्या होता है कि because इंटरव्यू एंड मेंस के बीच में बहुत कम टाइम होता है, स्पेशली मेरे लिए बहुत कम टाइम था, ऑल्दो अक्टूबर तक चले बट मेरा अगस्त में हो गया था. सो इतने कम टाइम में यू हैव टू रिवाइज अ लॉट, सो इट बिकम्स इंटिमिडेटिंग that how would I be able to complete the, you know, you have to go through the entire syllabus once. So at that time I would suggest कि आप mocks लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा and get some insights from the people who are already you know, because the panelists, so they would help you. जैसे for example मेरे mock में EduTap ने मुझे बोला था कि आपकी personal जो भी प्रोफाइल है, क्योंकि डेफिनेटली पर्सनल प्रोफाइल बेस्ड क्वेश्चंस आते ही हैं इंटरव्यू में. सो दे टोल्ड मी कि पर्सनल प्रोफाइल बेस्ड में आपके सब कोई इशू नहीं है, बस आप फाइनेंस और ESI मतलब इकोनॉमिक्स वाला पार्ट संभाल लेना. सो आई मोस्टली फोकस की नहीं, मुझे ज्यादा से ज्यादा आरबीआई की बैलेंस शीट और ये सब एकदम क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए. एंड कोई भी इश्यूज आते हैं तो डेफिनेटली आप अपने मेंटर से पूछ सकते हो. एवरी वन इज वेरी हैप्पी टू हेल्प, स्पेशली आपको कोई भी डाउट हो तो. So how was the interview panel of EduTab, and as well as the feedback that they gave you, how it helped you in sailing through that particular process? Yeah, so interview panel of EduTap was very helpful, and they told me about not only what shortcomings I had, but also how should I overcome them. So for personal aspect, they told me that since I was shifting a lot of jobs, so वो भी इशू था, उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, किस तरीके से आंसर करना है. सो मेरे जो भी डाउट्स थे तो उस टाइम पे उन्होंने उसको जो है केटर किया. And in the actual interview also, a lot of questions that were asked to me in the mock, वो काफी कुछ similar भी रहा. So I was very happy that yes, because if you are well prepared before the interview itself,
So first of all, you get good confidence that yes, I would be able to face the panel. And secondly, जब आप वहां पे बोलते हो एक्चुअल इंटरव्यू में और आपको कुछ सिमिलर एस्पेक्ट्स पे या एरियाज पे आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है कि yes, I will be able to answer this question with confidence. So any books that you refer to during the interview, like being written by Shri Raghuram Rajan ji or Subba Rao ji, or the RBI speeches that you refer to for your interview preparation? No, I do not have that much time to read the books, but definitely RBI की एक annual report आती है, वो मैंने अच्छे से पढ़ी थी. I think उसके जो language है उसकी वो बहुत important है, because आप जब interview में आपके सामने इतने renowned panelists बैठे होते हैं, educated panelists बैठे होते हैं, तो वहां पे आपको clear होना चाहिए कि मैं क्या बोल रही हूँ या क्या बोल रहा हूँ, and उससे किस तरीके से I would be, because somewhere down the line they are looking whether you will be an asset to RBI. So अगर आप उनको convince कर पा रहे हैं कि हाँ मैं interested हूँ RBI में and definitely मैं asset रहूंगी RBI के लिए, तो वो आपको जो भी reports होती हैं वो बहुत अच्छा एक आपको idea दे देती हैं कि how does RBI actually work, what is the motive of RBI and how RBI is helping in building the economic security of our nation. So उस टाइम पे डेफिनेटली जो है मैंने रिपोर्ट्स वगैरह पढ़े थे आरबीआई के. That's really good. So I believe कि सभी एस्पिरेंट्स को ये आंसर्स मिल गए होंगे कि इंटरव्यू के लिए बेसिकली उनको क्या करना चाहिए और किन किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए. So very well done, ma'am. Now kindly throw some light on the psychometric test, which is also there in the recruitment cycle. Yeah, so psychometric test was very basic actually, and हमारा जो psychometric हुआ था तो उसमें mostly questions वो management related ही थे. मतलब they were trying to gauge whether you can be a good manager or not, whether you could be a good leader or not. So कुछ questions पूछे गए थे and there were 5 options and you just had to tick whether you completely agree or slightly agree or neutral or completely disagree or slightly disagree. So depending on whatever you feel, and I don't think उसके लिए कुछ अलग से आपको preparation करने की जरूरत है. Just be honest and just be true to yourself and आप actual वहाँ पे किस तरीके से personality है आपकी उस type से आप answer करिए बस. Okay, that's really good. So ma'am, apart from that, any message that you want to give to the students who are basically aspiring to become RBI Grade B officer next year? See, one of the most 3 important things are there actually. एक तो perseverance हो गया आपका, एक patience हो गया, and third is your consistency. If you have these 3 things, then be it RBI or any government examination, you will be able to crack it. अगर इन तीनों में कहीं पे भी आपकी कुछ shortcoming रह जाती है तो एक दिक्कत है. But आपके अंदर patience है, because these exams are now lakhs of aspirants are taking these exams, so definitely patience की बहुत जरूरत है. Sometimes you would feel low कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, उस time पे patience आपको रखना पड़ेगा. Persistency definitely, because these exams require a lot of time of yours and a lot of sacrifices that you will have to do. आपको जैसे for me, I had been away from social media for at least 3-4 years. I was not using any kind of social media because focus बहुत important होता है and वो persistently आपका जो है focus बने रहना चाहिए. और you must, आप हमेशा याद दिलाते रहिए अपने आप को कि आपका गोल क्या है and उस गोल के लिए आप कहाँ तक जाने के लिए तैयार हो. तो जब आपका उस लेवल का जिसे हम कहते हैं शिद्दत होगी, तो definitely things will fall in place some later or sooner. And third is obviously consistency. So आप करते रहिए, have faith on yourself, have confidence, have believe in God, and definitely good times आते हैं, कभी late से कभी जल्दी से, but definitely आते हैं. So my dear students, kindly note down the 3 pillars of success that ma'am has already told us. So these are also going to help you in becoming the RBI Grade B officer. Now my final question, how did EduTap help you in becoming the RBI Grade B officer? See, EduTap has helped me in all the phases, be it for phase 1 when I used the current affairs magazine. Phase 2 में भी I used to refer to the YouTube videos on a lot of topics, be it for quant reasoning
or even for ESI and FM. And the important questions that were shared on the YouTube by the faculties of EduTap, they played a very important role, because I was able to gauge key on what area should I focus more. And that helped me in not only like reinventing the kind of preparation that I was doing, but also in gauging that what kind of examination can I expect. And when you आप उसको जब combine करते हैं previous year questions के साथ, तो बहुत it is more than enough. And definitely इंटरव्यू में तो मैंने मॉक लिया था एडुटैप के साथ, और बहुत मुझे हेल्प मिली थी। आपकी फैकल्टी ने पूरा सपोर्ट किया, मुझे मोटिवेट किया। आई वाज फीलिंग लो कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, बट फैकल्टीज ने मुझे समझाया कि नहीं, आपका होगा, जस्ट हैव फेथ ऑन योरसेल्फ। Very good to hear that, ma'am. And now I really believe, guys, that all of you have really got all your answers, because ma'am has given the answers in a beautiful manner to all the questions which are related to the exam, the preparation, and how can you manage in your tough times as well. So these are the important things that you should note down. And guys, thank you for joining us. And ma'am, thank you for joining us on our platform. And from the whole team of EduTap and the student fraternity, once again wishing you all the best for your upcoming journey as a RBI Grade B officer. Thank you so much. It was really lovely talking to you. Thank you. Thank you, ma'am.